Hello, Assalamu alaikum, and good evening, all of you. Uh, Welcome to the program on the sixth program off today. Uh, we are using a slightly different software this time. So, unlike our team meeting software, uh, we are now using GoToWebinar. So, just because you may not have been exposed to this. Okay, sorry about the disconnection. I think I'll have to switch my network somewhere in between. But if you if you find that there is an issue with my voice or audio quality, I will tell you exactly. So, ladies and gentlemen, my name is Haroon Ahmed Jan. I am the regional head of member affairs for the Middle East South Asia region, and very glad to be with you today for the six digits group S1 kickoff. Okay, now first of all, after joining this session, uh, you should be able to see um, this menu that appears on the right side of your screen. In most cases, right side, but in some other cases, it can be a floating menu or it can be moved to one side. Uh, its distinction is the orange arrow that points outward from the screen. So if you click the orange arrow, it starts pointing outward. If you click it again, it starts pointing inward. So when it is pointing inwards, if you click it, the menu opens up. And this menu will have some options available. So if you look through options, the ones that are most relevant to you are attendees, and you should be able to see the attendees there. And when you click attendees, there should be an option available for you to raise your hand. Okay. May I request you people, let me see if I can switch on the raise hand first. Yes, switch it on. Attendees can do attendee list. Yes, you will be able to view the attendee list, and you should be able to view the session timer. Okay, exactly. So here, you've done the right thing. Check if your hand raise is working. All of you, please check if hand raise option is working. So switch it on and then lower the hand. Now, in this case, you will not have the mic control. And that's because that if you attended the orientation session, we were having quite a bit of an issue with the microphone control and the camera control. Uh, and there was quite a lot of disruption because of that. Now, in this particular case, you will be able to raise your hand, and I will from time to time keep looking at the hand raises. And once I see somebody's hand raised, as in the orientation session, I will unmute the mic. So I will have that unmute control, or my associate here, Nizam, will have the unmute control, and they will unmute the individual, and then they then put that individual back to mute. And we will just try this in a little bit when I'll ask you for an introduction. So we will do a quick round of introductions also. So in the GoToWebinar menu, this is the first important thing that you have to remember. Uh, so attendees section, you should be able to see a list of attendees. There is a chat function available. You should be able to chat with each other, so you can send messages to everyone and all.
And there is a questions button as well. So somebody has already posed a question, and I can very easily how to view any questions that are asked. Now, there's a question by Muhammad Zishan who's saying, please could you repeat how to hand raise? Okay. Zishan, the procedure for hand raising is go to the attendees section of the menu. In the attendees section, you should have a hand raise option and a hand lower option. There are quite a few individuals who've just done it. So if I can see your name, Zishan, let's see if you're able to. Yes, Zishan, I can see your name on the screen now. Can you please raise your hand and lower it? Okay, let's try somebody else. Muhammad Uzair Khan. Muhammad Uzair Khan, if you're there, can you raise your hand? Muhammad Numan Sikandar. Okay. Am I audible? Can you all hear me? Narmeen Mansoor. Okay. So, yes, I can see Amar Rahman's raised. Zishan, I can see your hand raised. Narmeen, I can see your hand raised. Fantastic. So, thank you very much for being attentive. So, I was for everybody hand now. So we go one by one. You go one. Don't raise your hand. We go one by one, and we will. I have the control. I can lower all hands. In the introduction, we will then check if everybody's hand raise option is working. Okay. Um, Now there are a few other important options. So there should be a handouts option available right now. So in handout, it currently says one live. So please expand this option, and there should be a file available as a handout by the name competencies assess yourself.xls. I will suggest you create a 6 digits folder on your computer. Everything that you are doing, which is related to this program, keep putting that into your 6 digits folder. So I would ask all of you to please download this file and save it on your computers. Right now, you should be able to see a bubble blinking on screens in the menu. That's the chat button. Let me see the message for everyone. Yeah. So Nizam has sent this message. Nizam is my associate from ACCA. He has sent a message to all of you. What we have done is there are two ways of downloading uh, this attack and the handouts. One is that while the session is on, while we are working on the GoToWebinar session, you should be able to click the handout section, download this document or this handout from the screen directly from the GoToWebinar menu. The other option is that we have a Google document folder also, which is, and Nizam has shared the link to this particular section with all of you. So from the chat menu, you can click at that link. You will be able to see the file available on the Google document, and you'll be able to download it from there. Now, the reason for putting it in two different places is that while the session is on, yes, you have that option downloading from here. But when the session is off, you will not have that option. So it's better that you go to the Google Drive and look at the options there and download it from there. Please remember one thing. Once you have opened up this Google Drive, this section of Google Drive,
please bookmark it. And I hope all of you know how to bookmark websites in your browser. I hope you can do that. But bookmark this so that every time we have to place a document or place a new resource, we place it in this particular folder. You should be able to go back and access it. Okay. There is a question asked by Suhaib. He's saying he didn't get any message. If you look at the chat option in the menu, and I'm talking about the go to webinar menu, there is an option that says chat. If you go in there, this message sent to the entire audience. Nizam, may I request you to repeat this message or send the message again? Okay, now this very quickly explains to you, various functions of the GoToWebinar. At the bottom, if you notice, it says the session is being recorded. So the good thing is that all these sessions will be recorded. Just as the session is over, today's session is over, you will receive an email saying that this is where the recording is placed. And if you want to go back and view the recording again and again and again, as many times if you want, you will be able to do that. If for any good or bad reason you're not able to attend a session live, you can go back and view the recording, which will be placed on our GoToWebinar channel. So you can go back and view the recordings at a later stage. However, let me just share with you, we have an 80% attendance requirement. Attending a session offline or viewing a recording will not count towards your 80% attendance. Attending a session live will count towards it. Okay. So I think that's a good slow introduction regarding the software that we are using. Okay, we have 34 attendees right now, and they are all sorted by their names as far as I can named alphabetically. They're sorted. So what we'll do is we'll very quickly run an introduction. Okay, there are two ways of doing it. Since there are 34 individuals, we will just very quickly go through each individual. Right? Please make sure that your microphones are working. There isn't too much disturbance in the background. Your internet connection is sound, right? So when I call out your name, you will have to unmute yourself very quickly. Do not take very long, otherwise we'll have to stop this process. And I'll move on to the next individual. So when I call out your name, you unmute yourself. Okay. People would already know your. So just very quickly tell what papers, what ACCA papers are you currently attempting or have passed, and one statement, one sentence about yourself and your interest or your hobby. Okay. It can be your hobbies, it can be your interest, um, it can be your ambition, from the 6 digits program. It can be anything about yourself. So your name, how many papers have you of ACCA have you already passed, right? And one interesting fact about yourself. These are the three things that you have to tell us about. So do not take more than 30 seconds, for your introduction. Let's very quickly begin. Since I hope you remember, all of you remember from the orientation session, that your network is your net worth. So it is important that today, when you're in the session, there are 33, 34 other individuals who are from all the different parts of Pakistan. Okay? It's important that you know each other. It's important that you talk to each other, you chat, you participate. So that's how you do it. Okay. So let's begin. The first individual alphabetically is Alina Shehzad. Alina, if you can hear me, please raise your hand. And when I unmute you, you can start speaking. Alina Shehzad, I'm waiting for your hand raised. Okay. I'll call out three other names.
Once you hear me, please be ready and raise your hand. It's Amar Rahman, Anam Kabani, and Risha Yusuf. These three individuals also please raise your hand and I can then unmute you. Okay, Arisha is the first one. Arisha, thank you. You're very attentive. We're still waiting for Anam Kabani, Amar Rahman, Alina Shahzad. Amar, thank you very much. I can see your raised hand as well. Anam, great. Alina, you're still not attentive, you're not listening. Okay, we'll begin with Arisha. Okay, Arisha, if you're ready, I'm going to unmute you. Please introduce yourself. Okay, Arisha, you have muted yourself. Please unmute yourself and introduce. Please click the microphone button. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Arisha. Walaikum assalam. Yes, Can you hear me? Arisha, yes, Arisha, we can hear you loud and clear. Please introduce yourself. Your name, Yes, I am which Arsha ACCA Yusuf. papers you passed, and one interesting fact about yourself. Okay. I am Arsha Yusuf and I have passed 7 papers so far, F7, F8 and professional still to go. And my hobbies Okay. are I like reading books, especially related to history, and I like to do gardening. Especially related to? And history. History, okay. War Great. history and Islamic history. Fantastic, okay, interesting. So, ladies and gentlemen, we have a person here who's interested in reading history, world history and Islamic history. Please remember that about Arisha. Thank you very much, Arisha. Please lower your hand and try to have done it. And let me put you on mute. Please keep yourself unmuted otherwise. So, next one is going to be Anam. Anam Kabani. I'm going to unmute you. Hello, Assalamu alaikum. Am I audible? My Yes, name is Anam Kawani, and I am left with ACCA papers SBL, AAA, and AFM. I like reading books on spirituality and about mystical personalities. And since I've been studying SBL, I recognize that I have a major interest in CSR, social corporate responsibility, like doing something for people, planet. That's all. Okay. Thank you. All right. Interesting. So, ladies and gentlemen, remember Anam, and Anam is our spiritual leader, and Anam is also interested in fine. You said spirituality and CSR. Interesting. Thank you very much, Anam. Hope you enjoyed the session. Next, we're going to move on to Amar Rahman. Amar, I'm going to unmute yourself. Anam, I'm going to lower your hand. So, Amar, please unmute yourself. Amar, please unmute yourself. Yes. Assalamualaikum, sir. Can you hear me? Yes, now loud and clear. Great. Please go on. Sir, I am Amar Rahman. I have currently done my ACCA till F4, and now I am currently preparing a UK taxation FR and FM for the September attempt. And I mostly like to accept challenges, and my hobby is to read books regarding finance. And I am currently watching the global recession and studying books regarding it. Interesting. Excellent. Okay. So I hope when you say studying on finance, you don't mean your finance coursework. Yes, sir. Really? Okay. No, I meant, do you read Financial Times or do you read ACCA's Student Accountant Journal? No, sir. I am currently reading my FM book along with the student accounting and the journal books on written on finance.
Okay, okay. I think a good idea will be to start reading Financial Times, finance. Thank you, sir. Excellent, Amar. Putting you back on mute. Lina, we haven't received a response from you. Um, we will keep a track of such individuals who are present but not present. Next, let's move on to Bilal, and I'm going to call out a few more names. Bilal Pasha, Durre Shehwar, and Durre Shehwar, I can see you've asked a question also, and Fahad Tabani. These three individuals, please raise your hands. Bilal Pasha, Durre Shehwar, and Fahad Tabani. Bilal Pasha, you're ready. I'm going to unmute you. Introduction, please. Hello, my name is Bilal Pasha Tahir, and I have only 2 papers left in my ACCA. And I just want to tell you that I want to go to investment banking, stocks, and all kinds of other derivatives. Okay, And currently, fantastic. Okay, I'm learning about those, and I even invested in few stocks myself. brilliant. Okay. I think it'll be interesting while introducing yourself if you can add one more line. If you have ever worked. Sir, I Yes, actually, Bilal. in the future, I want to become an investment banker. Fantastic. Excellent. Excellent. And about any work experience, have you worked anywhere Hello? before? Hello? Yes, Bilal, Hello? I'm asking you. Hello? Bilal, can you hear me? Yes, Bilal, can you hear me? Yes, sir. Clearly now. Sir, as I was telling Okay. that in the So just future, very I quickly want to about. become an investment banker. Okay, great. Thank you very much. We got Hello? that. Have you Thank you. worked anywhere before, Bilal? Um, yes, sir. Sir, I have worked in a taxation firm for the UK that does taxation for SMEs, Okay, all small right, and all medium right. Great. Thank you enterprises. very much, Bilal. Thank you. Thank you, sir. Yes, Thank you, sir. Bilal will be our investment banker. Great, Bilal. Thank you. Next, let's move on to Durre Shehwar. I am unmuting you. Durre Shehwar, please speak. Hello, Assalamu alaikum. Ji, Hello, Samra. sir. Can you hear me? Yes, we can hear you. Okay, my name is Zul Shahwar and I'm 21. I'm currently preparing for F8 for September attempt. I have done with F1 to F7 and I have 5-year experience Okay. in accounts and finance field. And I'm currently working as finance officer in educational institute and it is also a CB center now. All right. And Okay. I want to be an auditor and my long-term goal is to open my own firm as an auditor. And you want to ask any question? Okay. All right. Yes, Durre Shehwar, great. I think auditor is great. However, external or internal auditor, that's the Yeah, question that external remains auditor. I want to be an unanswered. external auditor. So I hope with that you'll have to follow another qualification, another local body qualification, if you want to become an external auditor. Yeah, Yep. currently I'm looking forward that which path will be suitable for me. But currently I am focusing on my ACC and inshallah I will find any route. All the best. All the best. All the best. Great. Thank you very much, Durre Shehwar. I'm putting you back on mute. There's a question that you've asked, Will Nizam, if you can answer the questions in the meanwhile. Move on to. Okay. Let's move on to Fahad Tabani, Hamad Moin, and Hassan. Please see, I'm going to unmute you. You can raise your hand. Please, Fahad Tabani. Hamad Moin, can you hear me?
Sorry about that. Fahad Tabani, Hamad Muin, and Hassan Aziz. Fahad, I'm going to try once again. Hello, assalamu alaikum. I have unmuted. Can you hear me? Can you hear me? आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, we can hear you clearly. Go on with your introduction, please. Okay, sir, my name is Fahad Tabani and I'm currently unemployed, but only 2 papers left. One is SPL and another one is advanced audit, जिसमें मैं पहले fail हो चुका हूँ. And secondly, I have no industry experience, but currently I'm teaching A-level students accounting. I have very good knowledge of accounting, especially financial and management accounting. So I'm currently teaching O and A levels accounting from last 2 years. So if anyone here knows any student who wants to learn A-level accounting and is interested in that, so can you can guys refer me. Fahad Tabani, yeah. So that was my short experience. So Excellent. Great, Fahad, thank you very much. From the name, I can tell that you are based in Karachi. And so I think our friend from Karachi has just been introduced. Muin, if you're ready, please raise your hand. I'm going to unmute you. Hamad Muin. Yes, Hamad, please unmute yourself. Assalamualaikum. My name is Hamad. I am an ACCA and CA student. I have one paper remaining, that is SPL, which is I'm planning to give in September. Recently, I am been working as an audit senior in Big Four. I have more than 4 years of experience. So as I am from assurance field, so my interests are like updates on auditing and financial standards. So working in a Big Four, I have been access to many materials and exposure to art. So that's my short introduction. Brilliant, excellent. That's very interesting to hear. Hamad, which city are you based in? I'm from Islamabad. Islamabad. All right. Okay, Hamad, thank you very much. We are moving on to Hassan Aziz. Hassan, you are unmuted now. Assalamu alaikum. My name is Hassan Aziz. Assalamu alaikum. My name is Hassan Aziz. Hassan. Assalamu alaikum. Hassan, I am trying to. Assalamu alaikum. Yes, we can hear you now, Hassan. Oh, sorry. Assalamu alaikum. My name is Hassan Aziz. Inshallah, I intend to attempt audit and assurance and financial management exams from applied skills stage coming September. I have an ambition for learning and adopting, although I do not have any particular area of interest when it comes to knowledge. I have a minor working experience at a taxation firm in my locality from August to November last year, and I also have a 1 month working experience at a chartered accountant firm pre-COVID-19, and I recently joined the ACCA from after completing my CA inter. Okay. And which city do you belong to? I live in Rawalpindi, sir. Rawalpindi. All right, great. Thank you very much, Hassan. Let's move on to Javeria Mansha. Javeria, we're going to unmute yourself. Yes, Javeria, please introduce. Please first of all click unmute and then introduce yourself. Yes. Okay, thank you. Unmute. I am Javeria Mansha. Assalamu alaikum. I am Javeria Mansha. I am ACCA finalist.
I am from Sahiwal, Punjab, and currently working as a TA of SBL in SCAN School of Accountancy, Lahore campus. और टीचिंग का एक्सपीरियंस है लेकिन मेरा इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं है. Okay. Sorry, about your papers. Couldn't hear you very clearly. How many papers have you passed? Sir, my 2 papers are remaining, triple and AFM. Okay. And which city do you belong to? I am from Sahiwal. Sahiwal. Okay. Yes, sir. All right, brilliant. Thank you very much. Thank you, Javeria. Thank you. We're putting you back Thank on you, mute. sir. Maha Javed and Maria Jalal, if you're ready. Maha Javed, it's your turn. Very quickly. We've unmuted you. Please introduce yourself. Click the unmute button and introduce yourself. Assalamualaikum. I'm from Lahore. Right now I'm working in a firm. I'm going to appear in audit assurance paper in the coming attempt, and my dream is to work in America as an accountant, and that's it. Okay, brilliant. Okay, and so for working in America, you'll probably have to gain the CPA qualification also. Yeah, I you will want see. To get into practice. Sorry. Okay, brilliant. Thank you very much. Thank you, Maha. Let's move on to Maria Jalal now. Maria, we're going to unmute you. Yes, please unmute yourself as well and introduce. Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum, everyone. Assalamu This is Maria Jalal, and I am ACCA Skill Module student, currently preparing for my financial reporting exam in coming attempt. I worked in KPMG Pakistan as an formal internal auditor. My interest in terms of field is towards audit and management. Okay. And secondly, my hobbies are to read and write books, inspirational ones, and to teach anyone if they need. And yes, sir. Thank you. That's it. Okay, great. Thank you very much, Maria. Mubin Akhtar, are you ready to be introduced? Introduce yourself. You've been unmuted. Please go on. Hello, Assalamu alaikum. Can you hear me? Yes, Mubin. Hello. My name is Mubin Akhtar. I belong to Rawalpindi, and I am CA finalist plus ACCA. I will attempt financial reporting and financial management in the upcoming attempt. As regard to work experience, I am currently working with a chartered accountancy firm for more than 4 years. I am currently working as supervisor. I have also a working experience in an international office of our firm for 5 months as a secondee. Thank you. Okay, brilliant. Excellent. And which country was that? Saudi Arabia. Brilliant. Excellent. Very good to hear that. Thank you. Okay, I think it's very good that most of the people are working at the student stage. So I think that's a very, very positive sign. Muhammad Hussain, I have unmuted you, so you can unmute yourself and speak. Muhammad Hussain. Muhammad Hussain, unmute yourself and speak. Okay, Muhammad Hussain has taken long. In the meanwhile, Muhammad Azim, another Muhammad Azim, and Muhammad Mohsen Siddiqui. Please be ready. Yes, Hussain. Hello. How are you doing? I'm good. Hussain, Hello. shoot. Can you hear me? Yes, loud and clear. Go on. Hello. Okay. This is Mohammad Hussain, and I'm doing ACCA, and I have just remaining 2 papers: advanced audit and advanced taxation. And I'm going to appear for advanced taxation in September attempt.
and I'm just working at chartered accountancy firm BDO Ibrahim and Co, which is located in Karachi, and I do also social work, and I have been I have been organizing Pakistan's biggest inter-school competition since 2017. That's it. Inter-school competition. Which inter-school Yeah. competition? Basically, in this Which competition, yeah, this is Olympiad, Badislam Olympiad. This this is for the young students who are around teenagers, basically for the teenagers who are studying currently in O levels, A levels, intermediate, and for matric students. This is for those students. All right. Yeah, there are a number of Thank you very much. more than 20. Welcome. Thank you very much, Mohammed Hussain. I can see the inspiration there, and I can see the energy coming from your side. Fantastic. I think it's good to note that everybody has a unique hobby or a unique interest or a unique accomplishment to share. So good to note that. Muhammad Azim, if you are there, unmuted you. You asked a question as well. I hope you got the answer. Muhammad, hello. Please unmute yourself. Yes, we can hear you now. Yeah. Yeah, my name is Mohammed Azim, and I'm currently doing AFM, as it is the only paper which is left with ACCA. And currently, I'm working in Deloitte as Senior Audit Associate since Which city are you based 2017. in? Multan. Multan. All right. Fantastic. And my So hobby how many is. years have you completed? Sorry? How many years of your practical training have you completed? Apart from audit firm, I have 9 years of experience. Wow. In total. Okay. And where else have you worked? Sorry, I didn't get. Where else? Where else have you worked? Yeah. इसके अलावा और कहाँ किया? I started in 2010 as Deputy Internal Audit Manager in manufacturing organization. Where? Afterwards, I went to in 3-star hosiery, Multan. Okay. All right. A manufacturing firm. Afterwards, I went to UAE. In Dubai, I joined UAE Exchange as a junior treasury associate. Afterwards, I joined Awazan Medical Center in Abu Dhabi. In Dubai. Okay. Afterwards, I went to Dubai. Then later on, I joined Awazan Medical Center as a chief accountant. Wow. Okay. Chief accountant. That's yes. interesting. Then due to some family qualification. Sorry. How much of your ACCA qualification is left? Only one paper is left. AFM. All right. All right. Which means straight after your paper, your AFM paper, you will be becoming a member. Inshallah. And I have keen interest in trading, forex trading. All Currently, right. I'm also Money trading market. on PSX. Yes. Brilliant. Brilliant. Very good to hear that. Excellent. Excellent. Thank you very much, Azim. Thank you. Let's continue. We have little time, but then we are, with a lot of patience, we are going through the list one by one. That's because I want everyone to be very, very fluent and clear with how to unmute, how to latch onto an opportunity, how to ask a question. Do not keep the audience waiting, and that should sort of increase the speed also. अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। तो हमारे पास हैं मोहम्मद मोहसिन सिद्दीकी। यस मोहसिन, आपने हैंड रेज भी कर दिया, मैंने आपको अनम्यूट किया है। आप प्लीज अपने आप को खुद भी अनम्यूट करें एंड स्पीक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहसिन है, मेरा ताल्लुक कराची से है। और मेरा जो आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। जी मेरा ताल्लुक कराची से है और
और मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस है वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ही रहा है। पहले मैं लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर ऑडिटर था, उसके बाद फिलहाल मैंने अभी पीआईए ज्वाइन किया है एज ए ACCA ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो मैं वहाँ पे ऑडिट सुपरवाइजर हूँ। और पीआईए के अंदर भी मैंने जो चीज़ें देखी हैं उसके अंदर भी वो गवर्नमेंट ऑडिट पैराज होते हैं हमारे यहाँ, वो वाली सेटलमेंट FIA के जो केसेस होते हैं वो पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे तमाम ACCS के अंदर वो मैं एक वाहिद ही ACCA ट्रेनिंग था जो उसके अंदर इंडक्ट हुआ था इन तमाम चीज़ों की सेटलमेंट के लिए। अच्छा। इसके अलावा मेरा अपना एक छोटा सा बिजनेस है, वो क्या कहते हैं, आजकल हमारा सीजन चल रहा है, सीजनल बेसिस पे होता है गाय बकरों का, तो वो काम कर रहे हैं। और मैं इंटरेस्टिंग। और मैं पढ़ाता भी हूँ, ओके। और मैं खाली F2 पढ़ाता हूँ। अच्छा, ओके, ऑलराइट, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यू नो, आपने डाइवर्सिटी जरा नोट करते जाएं सब लोग, क्या क्या डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग हैं। वेरी ग्लैड टू सी दैट मोस्ट ऑफ यू वर्किंग, वेरी ग्लैड टू सी, बिकॉज दैट्स वेरी अनयूजुअल। अभी भी आप मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को, अगर आप 30,000 25,000 स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान, आप उनमें से देयर यू नो यूनिक 40 इंडिविजुअल्स जिन्होंने 6 डिजिट्स को ज्वाइन किया है, सिलेक्ट भी हो गए, एंड देन you know increasingly feeling the need of going through this training. So मैं एक बात यहाँ जनरलाइज कर सकता हूँ, और मोहसिन आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा आपका टाइम ले रहा हूँ, बट एक चीज जनरलाइज कर सकता हूँ कि जिन लोगों ने कहीं ना कहीं काम किया है उनको ये नीड फील हुई है कि 6 डिजिट्स प्रोग्राम में स्टेप इन करें और देखें कि वो अपना अर्निंग पोटेंशियल कहाँ तक ले जा सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी गिव यू द गुड न्यूज, most of you are working, most of you who had some experience, I can tell you this program is going to be very useful for you, provided आप लोग अपने आप को अभी से ही चैनलाइज करें और अपनी एनर्जीज को राइट डायरेक्शन में मूव करें। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी। मैंने स्टॉक मार्केट के अंदर देखा, मनी मार्केट में देखा लोगों को, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की तरफ लोगों की इंक्लिनेशन देखी है, राइट? तो टीचिंग की तरफ इंक्लिनेशन देखी है। आई थिंक दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच मोहसिन, आप कराची से में बेस्ड हैं, इज दैट राइट? जी हाँ। Great, okay, thank you very much Mohsin. I'm putting you back on mute, and next we move on to Mohammad Murtaza, Mohammad Noman Sikandar and Mohammad Saqib Ashraf. Murtaza, आपकी बारी है पहले। I can see that you have been inactive, so मैं आपको unmute कर रहा हूँ, please go on. Murtaza, you're unmuted, please go on. Hello Murtaza, can you hear us? Okay, I'm putting Murtaza back on mute. और मैं एक फैक्टर एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। इस सॉफ्टवेयर का ये एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ये आपको एंड ऑफ द सेशन पे ये रिपोर्ट जनरेट करके देता है कि कितने लोग अटेंटिवली सेशन को देख रहे थे, अटेंड कर रहे थे, और कितने लोग सिस्टम ऑन करके किसी और एप्लीकेशन पे काम कर रहे थे या कहीं और जाके बैठ गए हुए थे और वो सुन नहीं रहे थे। ये डिटेल हमारे पास मौजूद होती है, राइट? तो हम इससे असेस भी करेंगे कि आप लोग कितने अटेंटिव हैं, और आप अगर ये एक्टिविटीज के अंदर पार्ट नहीं लेंगे तो ऑफ कोर्स इसका बेनिफिट आप मिस करेंगे। एंड सो इन एनी केस मोहम्मद मुर्तज़ा को हम लीव आउट कर रहे हैं। मुर्तज़ा, आपके नाम के आगे एक ट्राइंगल हमें नजर आ रहा है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि आप अटेंटिव हैं। मोहम्मद नुमान सिकंदर, इफ यू आर रेडी वी आर अनम्यूटिंग यू। और मैं आगे बोले भी दो नाम पढ़ देता हूँ, मोहम्मद साकिब अशरफ एंड मोहम्मद ताहा। प्लीज आप दोनों रेडी रहिए। नुमान सिकंदर, वेरी क्विकली आई अनम्यूटेड यू, आप भी अपने आप को अनम्यूट करें एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ क्विकली। मोहम्मद नुमान सिकंदर, yes, you are you can unmuted, please introduce yourself. Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum. Sir, my name is Mohammad Nawaz Sikandar and I'm from Khanewal. Sir, I have passed paper select 5 and I am preparing for tax, financial reporting and audit for September attempt. And I am interested in reading books of Islamic history and as well as Pakistani history. And sir, I am also a part-time freelancer. I work on Fiverr and Upwork. Somehow I got 2 or 3 jobs in a month. And I want to work in government department like we are. जी सॉरी नुमान, आप कुछ कह रहे थे? And sir, I want to work in government departments like FBR. Government department. All right, okay, interesting.
Interesting. Ladies and gentlemen, another interesting thing. Noman mentioned that he's working for Upwork and Fiverr. And Noman, आप से हम किसी वक्त ये सीखेंगे कि आपने अपने प्रोफाइल को अट्रैक्टिव कैसे बनाया. लोग कहते हैं जी हमने अपना प्रोफाइल बनाया हुआ है, हमें कभी कोई असाइनमेंट ही नहीं मिली. तो आपसे भी हम सीखेंगे कि आपने अपने प्रोफाइल को कैसे अट्रैक्टिव बनाना है और कैसे असाइनमेंट्स अट्रैक्ट है. Great, thank you very much. Noman, which city are you based in? Sir, I am from you said? Khanewal. Yes, sir. Khanewal, brilliant. Excellent, excellent. Okay, ये Noman particularly talking about individuals who are based in far-flung areas, in cities which are not close to major metropolitans. I think this is an excellent option, and I can tell you आप इसके through अपने वक्त का सही इस्तेमाल कर रहे हैं. Very, very, very well done. Excellent. Thank you. Continue your good work. Muhammad Saqib Ashraf, I've unmuted you. Please unmute yourself and speak. Muhammad Saqib Ashraf. Assalamualaikum. Walaikum Hello. assalam. My name is Muhammad Saqib Ashraf. I'm from Karachi. Currently, I have 2 papers left, LW, which is law, and SBL. Currently, I'm working for K Electric, और मेरा जो area of interest है Okay. हाँ मैं इससे पहले मेरा ख्याल है PIA ये में था बात छुपा के रखनी चाहिए थी. नहीं अब तो खैर पता PIA में थे. जी PIA में था, PIA के बाद में फिर K Electric में आया हूँ. और अब मेरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट इस टाइम पे है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन, और मैं इसको सीख भी रहा हूँ. आपको शायद पता होगा PIEIC के बारे में, जो प्रेसिडेंट इनिशिएटिव प्रोग्राम लॉन्च हुआ, तो उसमें मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन सीख रहा हूँ. Brilliant. Wow. 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 Excellent. Thank you very much, Saqib. And I hope आपने PIA को भी ठीक करने की काफी कोशिश की है, और I am sure आप इलेक्टेड को भी I think हालात बेहतर करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे होंगे. Please continue your good work. Inshallah, inshallah. I think अभी तक मेरा ख्याल है we have been through about 30 individuals. किसी एक individual का भी प्रोफाइल एक दूसरे से नहीं मिल रहा. सिर्फ मुझे जो 2 चीजें कॉमन नजर आई वो हिस्ट्री की बुक्स रीड करने का इंटरेस्ट था. And other than that, everybody is enjoying a unique profile. This is so interesting, और this is so useful for all of you कि आप लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, नाम याद रखें कौन सा इंडिविजुअल किस कैपेबिलिटी का है. आई एम श्योर अभी थोड़ी देर पहले जब हम मेरा ख्याल है साकिब का या नोमान का जब हम इंट्रोडक्शन ले रहे थे, या हमने साकिब का लिया था. सो जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखनी है वो साकिब से कांटेक्ट करे, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखनी है वो हमारे खानेवाल वाले दोस्त हैं उनसे कांटेक्ट करें. सो आई थिंक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. जनाब चलें आगे चलते हैं मोहम्मद ताहा की तरफ. ताहा मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज जल्दी से अपना इंट्रोडक्शन कराइए. अपने आप को अनम्यूट कीजिए. Assalamu alaikum. ताहा. वालेकुम सलाम. So my name is Muhammad Taha and I am from Karachi. I am left with 3 papers and currently working in chartered accountant firm BDO. I also help my father in his business and previously also tried freelancing but was not successful. Okay, all right. Taha, can you hear me? Yes, sir. Okay. तो इंटरेस्टिंगली ताहा अभी हमारे एक फ्रेंड यहाँ पर थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था फ्रीलांसिंग के हवाले से अपने आप को. तो प्लीज आई थिंक it will be useful for you to remain in contact with him also. Okay, and great that you're helping your family with your family business also. Again, a unique attribute. Thank you very much. Let's move on to Umair Afzal. और उमेर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. इसके बाद मोहम्मद उजैर खान और मोहम्मद जीशान तैयार रहे. जी उमेर. अस्सलाम वालेकुम सर.
जी अस्सलाम वालेकुम. Sir, my name is Mohammad Mairafzal. I have 3 papers left with ACCA and currently preparing for triple A paper for attempt in September. And currently I'm working as an audit officer in Park Electron Limited. It has been 4 years with PEL. I'm looking forward myself as an financial manager and to earn 6-digit salary. Inshallah. And I am part-time teacher also to intermediate commerce students. All right. All right. There's one fact that I wanted to share with all of you. जो teaching side पे interested हैं या current teach कर रहे हैं. Please remember कि जब ACC के practical experience की बात आती है, practical experience requirements की, तो जो teaching experience है आपका और relevant qualification है, ये नहीं कि आप metric को accounting पढ़ा रहे हो या आप ICOM को accounting पढ़ा रहे हो, इस level की qualification का teaching experience maximum 1 ही काउंट करता है आउट ऑफ द 3. इसका मतलब ये है कि आप टीचिंग को एज अ साइड हॉबी या एज एन इंटरेस्ट तो मेंटेन कर सकते हैं इफ यू वांट टू प्रोग्रेस टू योर मेंबरशिप आल्सो, लेकिन आप इसके ऊपर मेनली रिलाई नहीं कर सकते हैं, राइट. आपको इसके अलावा किसी और जगह से अपने बाकी 2 साल की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कंप्लीट करना है. तो आई होप उमैर आप भी इस चीज़ का नोट करेंगे. आप पेल में काम कर रहे हैं, फैंटास्टिक. पेल इज एन ACCA also, और I can also tell, मैंने आज से मेरा ख्याल है कोई 12 साल पहले या ज़्यादा नहीं, 15 साल पहले मैंने पेल की एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन की, स्टार्टिंग फ्रॉम मियाँ साहब to Mr. Haroon Khan, who was the managing director then, to I think to about 60 employees of PEL, उनकी ट्रेनिंग मैंने पर्सनली की है. और आप अपने CFO जो हैं, अगर उनके पास जाके हारून जान का नाम लेंगे तो शायद उन्हें जान. जी सर, Inshallah. Well done. Thank you very much. Let's move on. Muhammad Uzair Khan, I'm going to unmute you. Please introduce quickly and we move on. Walaikum salam. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Uzair Khan. I am from Peshawar and currently I'm preparing my last paper SBL for September attempt. And I'm more of interested in tax related issues, especially in Pakistan tax. And believe me or not, currently I'm doing tax assignment at a company, real estate company from chartered accountant firm. All right. Okay. That's the end. That's very interesting. That's very interesting. उज़ैर, जो लोग अभी जिन्होंने मेंशन किया है कि टैक्स के अंदर काम कर रहे हैं, आई थिंक टैक्स इज द फील्ड जो कि जिसके एंटिक्वेट होने का या जिसके इरेडिकेट होने का इन द नियर फ्यूचर कोई चांस नहीं है. इनफैक्ट अगर आप अपनी अप्रोच को या अपने स्कोप ऑफ वर्क को ग्लोबल या इंटरनेशनल लेवल पे ले जा सकते हैं, सो क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन पे this is the most growing field as per ACCA's research report. This is one of the most growing fields that's going to be there. So continue your good work. Thank you very much. Okay, thank you. दीजिए जनाब, हमारे पास पेशावर से भी साहब आ चुके हैं और इससे पहले कराची, इस्लामाबाद, खानेवाद, साहिबाद, भूटान, फैंटास्टिक, इस्लामाबाद and so many others. रावलपिंडी. मोहम्मद जीशान, आप अपना हाथ उठाया हुआ है. जीशान, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. जी, introduce yourself. पहले अपने आप को अनम्यूट कर लें और फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस करें. मोहम्मद. Hello, can you hear me? Hello, can you hear me, sir? We can hear you. We can hear you. Yes. Yeah. Assalamu alaikum, all of you. This is Muhammad Jishan. Trust you guys are doing great and good health. I have done all my ACCA exams except. Hello. आवाज आ रही है सर आप? जी, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा. This is Muhammad Zishan. I have done all my ACCA exams except SBL, which I am going to attempt in September 2020. Inshallah. I want to grow my career in accounting and finance role. So I currently working in accounting and finance role since April 2019 in Islamabad.
I'm actually from KPK. Okay. At the end, I also want to start my own business in order to give back to some employment opportunity to society. And as mentioned earlier, one of candidates CSR. So I also working for this. Hopefully, this work in near future. Inshallah. Inshallah. Thank you. Fantastic. Thank you. Fantastic. Thank you. And you're working in Islamabad currently, right? Yeah. Yeah. Although you belong to KPK. KPK. Yeah. Well done for your SPL exam in September. Good luck. Thank you. Let's move on. मुर्तजा हुसैनी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. नाइला बशारत प्लीज स्टे रेडी. मुर्तजा प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और इंट्रोड्यूस कराइए अपने आप को. जी अस्सलाम वालेकुम मुर्तजा. Walaikum ji. My name is Murtaza Hussain. I am from Karachi, and I have currently experience in Moore Stephens, Sheikha Mufti, now called Moore Global, and I have 7 months experience in it as an audit junior. Okay. And before that, and before that, I have 6 months, 6 weeks, or 6 weeks experience in AGP as a account assistant. Okay. And right. before that, I have experience of around 2 months in as a account assistant in a trust which is Brani Hospital Trust. And I belong from Bora community, so I have hobbies with events in which are going on in Bora community events, and I have hobbies to listening to our leader. So great, excellent, excellent. I think हमारा आपकी जो community है वो ACCA के साथ in touch भी है और for some activities that you want specifically conduct in your community. We'll look at that and we'll see what best can be done. Thank you very much. Thank you for your question. And in studies, I have passed 10 papers, and remaining 3 papers are there left. And I have failed in F5 and P2, but currently now passed. Okay. But that's over. But now it's over, right? Yeah. Great. Thank you very much. Thank you, Murtaza. चलिए जी, next we move on to नाइला बशारत. नाइला ने बहुत देर से हाथ खड़ा किया हुआ है. जी नाइला, if unmuted you, please unmute yourself and speak. Assalamu alaikum, sir. Can you hear me out? Loud and clear. Okay, thank you. My name is Naila Basharat and I'm from Peshawar. And I've previously done my A-levels with accounting as one of my subjects. And currently I'm an ACCA finalist. And when I'm you say left with finalist, that means how many papers left? That means that I've done my F-series and currently I'm left with 3 professional, strategic professional papers. All right. Okay. So okay, I excellent, don't. excellent. And any work experience, Naila? No, I don't have any experience because I've been doing short duration internships in government and semi-government institutions. All right. Okay. And my long-term goal would be to be an entrepreneur. But for like achieving that goal, I think it's important to go for jobs. So I think I'll be going in the area of financial management. Excellent. And excellent. it will include doing CFA like for my future plan. Okay. All right. Great. Thank you very much. An important piece of advice. As far as my hobbies are concerned, I think it's about traveling around. I'm a frequent traveler and I travel to countries like US, UK, UAE often.
Excellent. All right, great. Have you been to northern areas of Pakistan? Yeah, that Out of your too. interest But in travel? usually out of Pakistan. Right. Okay. Thank you very much, Naila. There is an important thing that I want to share with all of you listening to Naila, and that is that if you don't want to make a long-term commitment with an organization while you are studying, it is always useful to at least continue to do internships. So these internships are really helpful. I can tell you about an individual, an ACCA student working in Telenor in Islamabad, and at a very young age, he grew to the position of an assistant manager, even as a student of ACCA. And you know, the one unique thing about that individual was that she had I think she had done about 10 internships before joining Telenor, and all in good organizations, in Askari Bank, in Shrambaje, etc., etc., such organizations, but then progressed very, very well. And I think currently, I'm not sure if she's back in Pakistan, but what I heard last about her was that she was based in Abu Dhabi, and was working there in the telecom sector company. So good, keep up your good work, Naila. Um, let's move on to Narmeen. Narmeen, आपके बाद हम कुरतुलैन, अहमद, राबिया शरीफ और आप लोग की टीम तैयार रहें. Narmeen, shoot. Please unmute yourself and introduce. Assalamu alaikum. My name is Naveen. I'm from Karachi. I'm preparing, I'll be attempting my financial management exam and upcoming exam. I have about 8 months of work experience in a startup as an accountant. I like to read about self-made millionaires, and I like to learn about their business models and enjoy their success stories. Excellent. I'm also interested in learning artificial intelligence, and I'm learning digital marketing also. Wow, excellent. Digital marketing. Brilliant. That's a unique field once again, and I think that's important for people to, for accounting and finance professionals to know about digital marketing qualities. And sorry, Nermeen, if I'm asking again, which city are you based in? I'm from Karachi. Karachi. Okay. All right, great. Thank you very much, Nermeen. We'll move on to Kuratul N now. Kuratul N, you're unmuted, and Rabia, please stay ready. Kuratul, you are unmuted. Please speak. I think there's something wrong with your microphone. We can't hear you. Okay, Kuratul, please see if your microphone can be fixed. I can see that you've unmuted yourself, but we can't hear you. So there must be something wrong with your microphone. Okay, putting you back on mute. Rabia Sharif, unmuted. Please introduce yourself. Rabia Sharif, please unmute and introduce. Yes, you're unmuted. Rabia, you can see that you're unmuted. Again, the same issue. We can't hear you. Rabi Saeed. Sorry, Rabi, I'm putting you back on mute. Please get your phones tested. Rabi Saeed, unmuted. Please unmute yourself and introduce. Assalamu alaikum. This is Rabi Saeed from Pakistan, Karachi. Sir, अभी तो next attempt में इंशाल्लाह taxation and audit and assurance का plan है मेरा.
next attempt में September attempt में इंशाल्लाह. Currently, I'm working as well with Usman Public School in head office as deputy manager taxation. So that's my experience. Okay. Thank you. Okay. All right. Great. Thank you very much, Rabi. Sabah Rahmat. I'm unmuting you, and Saima Abdul Wahid, please. Okay, ready? Sabah Rahmat. Please unmute yourself. Okay. Sabah Rahmat, if you can hear us, please unmute yourself and introduce. Okay. Back on mute. Saima Abdul Wahid. Yes, with a bit of difficulty, but we can hear you. I'm left with 6 separate professional quotas. And recently in March 2020, I've been holder of POC, POC and applied for my experience, I have 43 years of experience in hospital field, and general suppliers industry. I'm currently working as a senior accounts officer. And Thank you, Saima. We're facing a bit of difficulty in hearing you, but we could pick up that you have passed 6 papers and you have 3 years of work experience. Fantastic. Please get your microphone and your internet connection tested. Should be easier for you if you have both these devices working perfectly well. All right, 3 names: Salman Abuzar, Suhaib Hassam, and Said. Salman Abuzar, please unmute yourself and introduce. I think we'll be joined by Sajid Aslam in a little bit. If you can hear us, please unmute yourself. If not, we are moving on to Suhaib Hassam. Suhaib, if you're there, we've unmuted you. Please unmute yourself and speak. Yes, you're unmuted. Suhaib, we can't hear you. Please get your microphone and your internet connection. It'd be good if you can disconnect and reconnect. Saida Dina, unmuting you. Please introduce yourself. Yes. My name is Assalamualaikum. Saida Dina. I am 17 years Yes, old. Saida. I have started my ACCA right after my matriculation. I just recently completed my intermediate. I have passed 6 papers and I'm soon going to pass F2 inshallah, and I'm preparing for F6 and F7 in December attempt. I am currently working in an organization which is located nearby my residence, where I look up all the expenses. I manage all the expenses and I assist my ma'am in all the income statements and cash flows. And I have interest in stock market and seeing all of them with so many experience, and I think that I'm going to learn so much from them. All right. Okay. Okay. Brilliant. Thank you very much. Thank you. Umar Samir, unmuting you. Please unmute yourself and introduce. Umar Samir. Assalamu alaikum everyone. This is Umar. I'm from Islamabad and I'm yes, I'm sab theek thak hain. Thank you. Great. Hello.
Yeah, so basically, I'm an ACCA finalist and currently pursuing with my last two papers, APM and SPL. I have an overall experience of working experience of about 2 years of different industries, starting from microfinancing sector to airline industry, and the most recent one with S&P Global Pakistan. I was working there till last December, and due to some health issues, I had to leave it, and currently seeking for an opportunity. Um, my long-term goal is I want to after becoming a member, I want to go for my CFA, and for my hobbies, for my hobbies, I'm a sportsman. Like I love to play cricket, table tennis, and football. But apart from that, I love to travel, and I'm into learning about new cultures, and I love actually meeting new people and love to socialize. This is pretty much about me. Wow, brilliant, excellent, Umar. Thank you very much. Our sportsman, fantastic. Thank you. Okay, Uneeb Sajid. I'm unmuting you. Please unmute yourself and introduce. Last but not least. Hello, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Uneeb. My name is Uneeb Sajid, and I am currently an ACC active student. And I have cleared my 6 papers, and now I'm going for my 2 more papers that are F9 and F7. And I have 1 year of experience in working as an accountant in a UK-based firm. And my long-term goals and interests are in accounts and audits. And I would like to start self-employed. I would like to be a self-employed in near future. Based in Uneeb? Sorry, your voice is distorting. Which city are you based in? I am in Lahore, DHL Lahore. All right, excellent. Thank you very much. Thank you. And finally, Usama Ahmad. Yes. Usama, you've been unmuted. Unmute yourself. Hello everyone, Assalamu alaikum. My name is Osama Ahmed and currently I am an ACCA finalist. I'm not yet working, but after my I am ACCA finalist and after completed my 2 last papers and I will start work in finance or accounting sector. Okay. Excellent. Thank you very much. I'm going to put everyone back on mute and lower all the hands. Thank you very much. So this was a very comprehensive exercise. I think from this exercise, what we have concluded is that we are dealing with a very diverse group of students, and there are about 40 individuals, all very diverse, all attentive. I think there was, with an exception of about a couple of individuals who could not respond or had technical difficulties, I think everyone was attentive. Everyone had a unique set of hobbies. Everyone had work experience. I mean, interestingly, if Sajid is also listening, every individual in this group is currently, majority are currently working, and those who are not currently working have worked or interned in the past with certain organizations. Most of them have very clear goals set for themselves. Everybody thought that they had a particular ambition or for a particular activity to target, and that is also once again a very positive sign. And I think it will go a long way in making sure that you are now following the plan that you have set for yourself. Great, and I think with this move on to Mr. Sajid Aslam, who's the head of ACCA Pakistan and has joined us. I think let me very quickly see if he's there. He's there. So Sajid, if you can unmute yourself. And Sajid, I hope you heard me in saying I was surprised by seeing literally 99.9% individuals in this group
of students who said that they were working. So I think that is a phenomenal sort of difference from what we normally expect about students. So I think that's very, very good. However, having said that, out of about 25, 30,000 students in Pakistan, this small group of individuals who come across are the ones who are currently working. So Sajid, if I can now hand over to you, what we've done so far is that we have shared this worksheet with all the participants. We haven't opened it up yet. It has been downloaded, and I hope everyone has it in the computer now. And we have also shared with them on where I can find this on a Google Doc. Sajid, with that, I'll hand over to you if you can take them to the next exercise, and if you want to give them any specific piece of advice, considering all of them are working professionals and currently also in the final stages of their ACCA qualification, mostly eyeing the September exam attempt to complete their strategic professional paper, SBL, after which we will see quite a few individuals coming through directly to membership. So I think that was something very, very interesting and useful to note. So Sajid, if I may hand over to you. Thank you, Harun. And I'm totally not surprised if these guys all are working. I think we are talking to the best of the best out of the lot. So again, I'll go back to the fundamental के 7 लाख लोग जो थे globally, उनमें से 45,000 लोगों को 45,000 लोगों को ये opportunity मिली, and there is a certain number of people who acted upon that. और अगर हम उस नंबर को भी देखें तो आज हमारे पास तकरीबन 200 के करीब का ये बैच होना चाहिए था, and we are looking at the batch of 40, 45 or a little less than 50 people. So I'm sure the batch which we are dealing with, they are the one who have responded to the dare कि भाई join ना करना अगर you don't have what it takes, right? So if somebody is in this session today, so they are the best out of the lot, right? So they are the best one, and it's a cream of the cream type of stuff which we are dealing with. People who have responded to the dare, who are ready to really challenge the status quo, और वो अपने mindset को एक और अपनी vulnerability को यहाँ पे openly share करके, and then they want to get into the different journey. So I'm totally not surprised. These are the guys, जब हम इन लोगों से मिलते हैं, so it's not about that they will do well for themselves and their family. ये हमारी सबसे बड़ी hope है कि going forward ये वो लोग हैं जिसने सोसाइटी को आगे लेके चलना है. These are the responsible individuals जो going forward हमें सबसे बड़ी hope देते हैं कि ये सोसाइटी जो है ये कंटिन्यू करेगी. और जिस तरह की अभी आपने कन्वर्सेशन की है, एंड आई वाज हियरिंग दैट, कि जिस तरह के इनके प्लान्स हैं और जिस तरह जो एक थॉट प्रोसेस है, वो मेरा ख्याल है सोसाइटी में अगर इन जनरल लोग इन लोगों को सुने तो बहुत सा जो पेसिमिज्म एग्जिस्ट करता है आउट देयर कि पता नहीं क्या होगा, वी कैन बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि जो भी होगा, वी हैव गॉट पीपल अराउंड देयर who know how to handle, and if they don't know today, they will figure out कि उन्होंने इसको किस तरह हैंडल करना है. So for me, I think it's validate my assumptions that people who will come and join in 6 digit, they will be the best out of the best class, right? So I'm very very happy that कि मेरी ये assumption एक दफा दोबारा validate हो रही है यहाँ पे. Going back to the fundamental कि हम करेंगे क्या आज, हम how we gonna move on, क्या मैं यहाँ पे कोई लेक्चर देंगे आपको, और क्या हम कोई एक्सरसाइजेस कर रहे होंगे, कोई MCQs कर रहे होंगे, तो हम बहुत कुछ कर रहे होंगे यहाँ पे, but we will be guided by you. आपके पास एक एक्सेल शीट आई कैन सी आपके साथ शेयर हुई है जो कि सेल्फ असेसमेंट की है, right? So I would request you take a 5-minute break or maybe 10-minute break, or right now it's 5:23 on my laptop, and if we can go and review that Excel file, you as an individual first, if you can go through that and try to make a best judgment कि आप अपने आप को कहाँ पे रेट करते हैं. We will do that किसी एक stage पे, not today but later. We will send you some Slido or some survey
जहाँ पे आप उसको बड़े अच्छे तरीके से फिल कर सकेंगे और वो रेटिंग हमारे पास सबके पास अवेलेबल होगी। बट राइट नाउ आई विल गिव यू 10 मिनट्स, और हमारे पास जितनी भी एक्सरसाइजेस करनी होंगी उसके लिए हमारे पास 10, 15, 5 मिनट्स, दीज आर द टाइम स्लॉट्स जिसकी हम बात कर रहे होंगे। व्हाई? हमारे पास जो टाइम है उसके लिहाज से वी रियली नीड कि आपका एक प्रेजेंस ऑफ माइंड हो और आप उन चीज़ों को क्विकली ग्रास्प कर सकें। और लाइफ में यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर एक चीज़ आपको मिली है तो आप कितनी जल्दी उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं और रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। So let's see what we can do in 10 minutes, what the best we can do in a 10 minute. Go through those competencies. आप लोगों के लिए वो competencies नई नहीं होनी चाहिए। ये competencies either आपने अपने एग्जाम्स में पढ़ी हुई हैं, और जो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं तो उनकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स के परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव से ये चीजें आ रही हैं। So 1 is the lowest and the 10 is the highest. So please do and rate yourself, and then we will come back and take it forward. इसके बाद हमारी जो एक एक्सरसाइज होगी, इस वक्त 5:24 है मेरे लैपटॉप पे, so I'll be let's come back at 5:35 and make sure we can complete this exercise based on what our understanding is. आपने जाके किताबें नहीं खोलनी, उस स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसकी बेस पे जो बेस्ट पॉसिबल अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होती है आपने उसकी बेस पे रेट करना है। और हम 5:35 पे we will be back. Use paper pencil, you can print it out or you can do it in Excel, but just make sure you should not lose that document. हमें ये document दोबारा वापस चाहिए होगा, ठीक है? So we have 10 minutes to go through that self assessment. There's a question from Muhammad Mohsin Siddiqui. He's asking for clarity. He's saying currently are we only required to review it or fill it up also? Okay. We have to fill it as well. Yeah. So fill it and keep a copy of this worksheet with yourself. Where can I download the sheet? You joined a little late. So Uneeb, if you look at the go to webinar menu, I'd explained the menu to everyone in the beginning. If you go to the webinar menu, there is a section which is called handouts. If you expand this section, there is a file sitting there by the name competencies assess yourself.xlsx. So if you can download this file, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको डाउनलोड की ऑप्शन देगा। तो इसको डाउनलोड करके आप अपने पास रख लें और इसको आप give it a shot, fill up this worksheet. And as Sajid said, this is based on the competencies that you require to achieve during your practical experience requirement. I also suggested कि आप लोग अपना 6 digit का folder अपने systems पे अलग बना के रख लें, और जितने डॉक्यूमेंट्स हम आपके साथ शेयर करें या जितनी एक्सरसाइजेस आपके साथ शेयर करें या जितनी प्रेजेंटेशंस आपके साथ शेयर करें, ऑल्दो आपको हमने एक गूगल ड्राइव की एक्सेस दी है, आप वहां से भी अपने डॉक्यूमेंट्स बार बार रिट्रीव कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी अपनी इंडिविजुअल असेसमेंट्स हैं और जो हैं उनका एक रिकॉर्ड अपने एक अलग फोल्डर में अपने लैपटॉप पे भी रखिए। ओके, let me very quickly go through any other questions that anybody has asked. Afsa, sorry we missed you out. आपने शायद थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, आप इंट्रोडक्शन में नहीं आ सकें, but never mind, there'll be more opportunities. Okay, I will once again, somebody is asking whether if if they watch the recording of this session, will that be number one? All these sessions will be recorded. Once the session is over, you will automatically receive an email with the we have created a separate video channel where all these videos will be placed.
So if you want to access any of the recordings later on, it will be available for view. However, uh, attending a session live and participating in the conversation is the requirement for this session. I will personally not encourage, and I'm sure Sajid will also bear me out. We will not encourage individuals to just watch the recording and not participate live in these sessions. It is about dialogue, discussions, contributing. It's about that, right? And it's not just about listening to a recorded lecture. So, however, if you're facing difficulty, yes, you view the recording. Um, in order to encourage most of you, we will mark you present if you are present live in the session. If you've just watched today, please next time try and present in the session yourself. So recorded sessions की participation will not count towards your attendance. Remember that. And I think by now you would have downloaded competencies and you will be working on them. So I'll leave you alone with those.
Guys, I hope आप लोगों ने अभी तक अपनी assessments जो हैं you have gone through that, and अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि I'm going to play a video. मैं अभी आपके पास assessment पे फिर वापस आऊँगा, and I'm just going to type the link of the video in case you have an issue in viewing it, और उस पे फिर हमने बात करनी है quickly कि आपने इसमें क्या देखा. Highs and the lows, the yeses and the nos. And do let me know जब आप and the friendships that I know will outlast fame. I decided to call the song Gratitude, for the gratitude that I felt for being here. And the people in it. Do let me know if you can hear the clearly. Can you hear the video clearly? Anybody can unmute themselves and let me know if you can hear the video. And authenticity. So tonight, I hope to reciprocate. Sir, I can hear it. Yes, I can hear too. So. Yes, so I can hear too. Okay, you can hear that. So let's go through that. Otherwise, मैं आपको इसका link भी share कर देता हूँ. मैं आपको इसका लिंक भी शेयर कर देता हूँ. हारून, अगर आप इसका लिंक शेयर कर सकें with everybody, because right now I can share with organizer and panelist, और वो मैंने वहाँ पे लिंक शेयर किया हुआ है. If you can just extend it to everyone. और मैं इस वीडियो को प्ले करने लगा हूँ. ये 8 मिनट की वीडियो है. If you find it difficult to watch through this GoToWebinar, I'll suggest आप इस वीडियो को parallel run करके देखें, because I'll be asking you question कि आपको इस वीडियो में क्या नजर आया. जिन लोगों ने ओरिएंटेशन सेशन अटेंड किया था, ये वीडियो हमने वहां पे शेयर की थी. आई एक्सपेक्ट कि आप अब तक 1 से 2 दफा ये वीडियो देख चुके होंगे, बट जस्ट फॉर एवरीबॉडीज कंफर्ट आई विल रन इट अगेन. ठीक है, सो हियर वी गो. दिस इज द वीडियो.
So again, my fundamental question, आपको इसमें क्या नजर आया? Anybody who wants to share, quickly unmute yourself and share आपने क्या देखा? There's no right and wrong answer. It's just about आपने क्या देखा. Anyone who wants to share? मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है. Anyone who wants to speak will have to unmute themselves and speak and then put themselves back on mute. Okay. Yeah, of course I want to share. गिटारिस्ट देखा गिटार बजाते हुए. क्या देखा? Sorry, दोबारा बोलिएगा. गिटारिस्ट गिटार बजा रहे थे. जी जी, लेकिन और क्या देखा आपने? इसके अलावा इनके पीछे का बैकग्राउंड देखा, वो जॉन एफ कैनेडी स्कूल का जो था वो था. इनकी एक कुर्सी थी वो देखी जिसके ऊपर आके बैठे थे. 2 माइक लगे थे इनके आगे. बस. और May I want to share something? Anybody else? Yep, please. Yeah, of course. If someone is passionate in something, he can literally do it. Literally, I ever first time I watched this के मतलब कोई एक बंदा गिटार के ऊपर तबला बजा रहा है. मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ में पैशनेट हैं, अगर उसको आप करना चाहते हैं तो यू वांट जस्ट कि आप उसको डू फॉर इट. मतलब कुछ भी आप कर सकते हैं. अगर एक बंदा गिटार के ऊपर तबला बजा सकता है तो डेफिनेटली ही हैज़ अ पैशन टू डू इट. Okay, If you are great. passionate to do, yes, thank you. Great, thank you. Anybody else?
अस्सलाम सर मैंने सॉरी जी प्लीज गो अहेड। अच्छा मैंने ये चीज़ नोट की है कि ये तो सबसे पहले अपने आप को कंफर्टेबल कर रहे थे, उसके बाद फिर इन्होंने जो है वो 1 से 2 काम एक साथ करना शुरू किए। पहले गिटार बजाया, गिटार के साथ साथ थोड़े डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट भी किया कि तबला कह सकते हैं आप। थैंक यू for sharing. Anyone else? जी सर, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ इसके अंदर कि ये जो गिटारिस्ट था इसने मास्टर डिग्री ली हुई थी एक इकोनॉमिक्स के अंदर। सो हैविंग अ डिफरेंट बैकग्राउंड कि अगर आप एक मास्टर डिग्री एक यूनिवर्सिटी एक अच्छी यूनिवर्सिटी से लेते हैं तो आप उसको एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब लाइक ही इज़ अ प्रोफेशनल इन दैट फील्ड। तो ये एक बिल्कुल इसकी हॉबी थी, इसका इंटरेस्ट था जिसके अंदर इसने एक्सेल किया और उसकी वजह से इसको अप्रिशिएशन मिली है। बिकॉज पीपल जो वहाँ बैठे हुए थे इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको मिली हुई थी, लेकिन उनमें से ये एक अपना एक स्किल एक इसने डेवलप किया जिसकी बेस पे इसको जो है इतना हाईली अप्रिशिएट किया गया। Great. I think it's a good अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक चीज़ जो मैंने नोट की है ना, इससे जो है ना अच्छे गिटार वाले हैं वो बचा लेते हैं। इसका जो अंदाज था ना वो सबसे मुख्तलिफ था, इसने Okay, अपने अंदाज से लोगों को जीता। क्या मुख्तलिफ था इसके फनी अंदाज? ये था, फनी था, इसने एक्टिंग भी साथ साथ में की है गिटार बजाते बजाते। अगर आप गिटार बजाने वाले को देख नोट कर लो तो सिर्फ गिटार ही बजाता है, बस सीधा सीधा बैठ के गिटार बजाता है। इसने जो इसका अंदाज था ना लोगों का दिल वो जीत लिया उसने अंदाज से। मेरे ख्याल में इसी गिटार में इतना कुछ नहीं था कि ये बजा रहा था, इससे अच्छे वाले बजाने वाले थे, मगर अंदाज इसका मुख्तलिफ था और यही इसका एडवांटेज था। Okay, थैंक यू I think let's build on that. अंदाज, क्या फर्क था इसके अंदाज में? अगर आज मैं आपको कहूं कि आप स्टेज पे चले जाएं, whatever you do best, आप जो भी बेस्ट करते हैं, you feel you are best at something, so क्या उसके अंदाज में ऐसी चीज थी जिसकी वजह से ऑडियंस एंगेज हुई थी? एक्चुअली सर ये हेलो, एक्चुअली उसने ऑडियंस को अपने साथ मिला के रखा हुआ था। मतलब ऑडियंस को शुरू में ही उसने अपने साथ मतलब मिलाया और फिर अपने साथ उसको लेके चला। मतलब साथ साथ उनको देख भी रहा था, उनकी तरफ देख भी रहा था, उनको अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रहा था। वो जितना वो साथ लेके चला डेफिनेटली ऑडियंस ने उस तरह उसको रिस्पॉन्स भी उसी तरह किया। फिर मतलब उनको साथ लेके चलना, दैट वाज डिफरेंट। ओके, और कोई अंदाज? आई थिंक ये सही डायरेक्शन में अब गुफ्तगू शुरू हुई है कि उसके अंदाज में ऐसी क्या चीज थी जो कि ऑडियंस के लिए कैप्टिवेटिंग थी? सर उसकी इनबॉर्न उसकी जो स्किल्स हैं जो कि उसने अपने आप को inborn is not the right word to start with. Skill can be developed. So वो स्किल था क्या सर नजर उसका आया? इंटरेस्ट, किसी चीज में जब इंटरेस्ट हो तो वो एक काम नहीं लगता, वो खेल बन जाता है। ओके, और वो रिफ्लेक्शन कैसे आ रही थी इसके गिटार बजाने सर में? रिफ्लेक्शन कितना रिलैक्स होकर आई कांटेक्ट मेंटेन कर ऑडियंस को एंगेज कर वो उस काम को एक्ट कर रहा था। ओके, आई थिंक आपने you have reached to the right thing. It's not about वो कर क्या रहा था, it's all about कि वो कैसे कर रहा था वो चीज। ठीक है, आपने अगर इसकी स्पीच इनिशियली देखी हो तो उसने वहां पे बात की थी कि our relationship outlast our fame. So वो जब एंटर भी हुआ था तो वो एक विनर एटीट्यूड से एंटर हुआ था और उसने कहा कि मतलब हम लोगों का रिलेशनशिप हमारी फेम से आगे चलेगा। सो वो इतना कॉन्फिडेंटली बात कर रहा था कि हमने तो फेमस होना ही होना है ना, ये तो गिवन है। सो ये एक विनर एटीट्यूड होता है। जब मैं ग्राउंड में उतरता हूं तो मैं कहता हूं कि जीतना तो मैंने है ही, अब हमने ये देखना है कि जीतने के लिए मुझे कितने गोल एक्स्ट्रा करने हैं, हमारे गोल होंगे कितने। सो ये डिसीजन नहीं है कि हमने जीतना है, हमारा डिसीजन ये है कि हमने कितने गोलों से जीतना है। ठीक है, सो दैट्स कॉल्ड विनर एटीट्यूड। नंबर 2, उसने जब वो एंटर हुआ है तो ही इज एंटरिंग ऑन अ स्टेज बट ही हैज अ रेपुटेशन। उसने अपना नेटवर्क और एक रेपुटेशन ऑलरेडी बनाई हुई है, क्योंकि अगर आपने देखा हो तो जब वो स्टेज पे आया तो लोग उठ के क्लैपिंग करना शुरू हो गए। सो रेपुटेशन मैटर्स। आप जो भी करते हैं उसमें आपकी रेपुटेशन मैटर करती है, और रेपुटेशन ओवरनाइट नहीं बनती।
रेपुटेशन बनती है आपकी जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और वो आपका स्किल देखते हैं, ठीक है, या आपका एटीट्यूड देखते हैं ऑन अ डेली बेसिस। और जैसे मैं पहले भी कल परसों के सेशंस में भी बातें कर रहा था कि वी डोंट एग्जिस्ट, हमारी फिजिकल एग्जिस्टेंस जो है ना वो इमैटेरियल होती है, हमारी जो ओपिनियंस में हम एग्जिस्ट करते हैं ना वो मैटर करती है। मेरे मुतालिक आपकी क्या ओपिनियन है, दैट्स हु आई एम फॉर यू, नॉट दैट हु आई एम एक्चुअली। लेकिन जो ओपिनियन आपने मेरे मुतालिक बनाई हुई है ना, वही ओपिनियन हर जगह कैरी करेंगे आप। और जब भी मैं आपके सामने आऊंगा तो आप मुझे नहीं देख रहे, आप अपनी ओपिनियन को देख रहे हैं और ओपिनियन को वैलिडेट कर रहे हैं। अगर मेरी इंटरेक्शन आपके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होगी तो आपकी एक अच्छी ओपिनियन होगी, और अगर मेरी इंटरेक्शन आपके लिए एक बुरा एक्सपीरियंस होगी तो एक बुरी ओपिनियन होगी, ठीक है। और ओपिनियन जो है वो एक दफा में नहीं बनती है, वो डिसीजन डेफिनेटली हम उस पर भी आएंगे, लेकिन ओपिनियन बनती है मेरी बार बार आपके साथ इंटरेक्शन करने की। फॉर एग्जांपल आप अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग, अपने एम्प्लॉयर, अपने स्टूडेंट, अपने दोस्तों से डेली बेसिस पे इंटरेक्शन करते हैं, और उस इंटरेक्शन की बेस पे वो पेरेंट्स, आपके एम्प्लॉयर, आपके जो दोस्त हैं वो आपके मुतालिक एक ओपिनियन डेवलप करते हैं। और जब भी आप कभी स्टेज पे खड़े होंगे तो वो आपको नहीं देख रहे होंगे, वो अपनी ओपिनियन के लिहाज से आपको, आपकी रेपुटेशन को लेके चल रहे हैं, ठीक है। सो दो बातें आपने याद रखनी है, एक विनर एटीट्यूड, जब वो स्टार्ट किया था उसने तो वो एक विनर एटीट्यूड के साथ आया था कि मतलब मैंने तो ऑडियंस को कैप्टिवेट करना ही करना है, ये उसका एटीट्यूड था और उसे पता था। और क्यों पता था? क्योंकि उसने ओवर द पीरियड वो रेपुटेशन बिल्ड की हुई है। कोई बंदा अगर 100 मीटर की रेस में जीतता है ना तो वो 30 सेकंड का स्पैन नहीं होता, उसके पीछे जो उसकी 2-3 साल की मेहनत होती है ना, कम से कम 2-3 साल की वो मेहनत होती है जो उसको वो 30 सेकंड में उसको 100 मीटर की रेस जितवाती है। तो विनर एटीट्यूड के लिए एक तो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए और आपका डिसीजन चाहिए कि आप जो ग्राउंड में उतर रहे हैं वो जीतने के लिए उतर रहे हैं। नंबर 2, आपको वो रेपुटेशन बिल्ड करनी पड़ती है ओवर द पीरियड बाय कंसिस्टेंटली डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट एटीट्यूड, कि आप जहां पे भी एंटर होंगे आपकी बॉडी लैंग्वेज वहीं पे बता रही होगी कि यू आर गोइंग टू डोमिनेट, आप एक विनर एटीट्यूड के तौर पे या एक विनर एटीट्यूड के साथ ग्राउंड में उतर रहे हैं। बहुत दफा जब हमारा इंटरव्यू कर रहे होते हैं कमरे में, जैसे कोई एंटर होता है ना तो हमें अंदाजा हो जाता है कि ये बंदा कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट नहीं है, कंफ्यूज है, किस स्टेज पे है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है इस सारा कुछ, और आधे डिसीजंस आपकी उस बॉडी लैंग्वेज और उस इंप्रेशन पे हो जाते हैं। तो आपका एटीट्यूड एंड हाउ यू रिफ्लेक्ट योर एटीट्यूड इन योर डेली लाइफ, इन योर नॉर्मल इंटरेक्शन, वो ज्यादा मैटर करता है, ठीक है, और उसी की बेस पे आपकी एक रेपुटेशन डेवलप होती है। हारून, आई कैन हेयर माई सेल्फ बैक, मेरा ख्याल है यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, अगर आप बाकियों को म्यूट पे कर लें दैट वुड बी हेल्पफुल। ओके, सो एक चीज तो ये हो गई, पहली चीज रेपुटेशन थी, एक विनर एटीट्यूड के साथ स्टेज पे आया, उसके बाद वट एवर ही इज डूइंग ही मे नॉट बी द बेस्ट इन दैट, लेकिन जिस तरीके से उसने उस सारी चीज को प्रेजेंट किया लोगों के लिए वो कैप्टिवेटिंग था। सो ऑडियंस को आप ऑडियंस को आपने किस तरह एंगेज करना है, दैट इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। अब अगर उसकी एक रेपुटेशन है अमीन तूफानी की और वो एक विनर एटीट्यूड के साथ स्टेज पे खड़ा है, अब उसने उस पूरी जर्नी में अपनी ऑडियंस को साथ लेके जाना है। ये बिल्कुल ऐसे है कि मैं अगर एक एम्प्लॉयर के पास हूँ, मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा हूँ या मैं अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ने जा रहा हूँ, तो जब मैं क्लास में एंटर होता हूँ तो वहां पे आधे लोग डिसीजन कर देते हैं कि आज आप जीतने आए हैं या आज आप हारने आए हैं, आप किस मोड से आ रहे हैं और किस मूड से आ रहे हैं। सो उस इमोशनल इंटेलिजेंस को आपने अंडरस्टैंड करना है कि जिस ऑडियंस के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं उस ऑडियंस को आपने कैसे कैरी करना है अपने साथ और उसको पूरी उस जर्नी में लेके जाना है। मैं आपको इसकी एक और बड़ी रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। अगर आप एक बोर्ड मेंबर के साथ बैठ के उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझाना शुरू करेंगे व्हिच यू मे बी बेस्ट एट, लेकिन बोर्ड मेंबर के पास 2 मिनट का टाइम है हर चीज के लिए, अब मुझे आप ये बताएं कि एक 70 सफ़े की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बोर्ड मेंबर को कैसे समझाएंगे। और इसी तरह अगर आप अपने ऑडिटर के साथ बैठे हुए हैं जिसने आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझनी भी है और उसने उस पर ओपिनियन भी देनी है, अगर आप उसको 2 मिनट में बोर्ड मेंबर की तरह की ब्रीफिंग देने की कोशिश करेंगे तो वो शायद ओपिनियन भी नहीं डेवलप कर पाएगा। सो आपने अपनी ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना है और उसके लिहाज से आपने उसको रिस्पॉन्ड करना है और उसको कैरी करना है उस सारी कन्वर्सेशन में
अपने साथ। सो आपने कहाँ पे जूम इन करना है और कहाँ पे जूम आउट करना है, वो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, और वो आप ऑन द गो कर रहे होते हैं। ये नहीं होता कि आप पहले एक फैसला करते हैं और फिर आप जूम इन जूम आउट करते हैं। हमने वो कैपेबिलिटी और स्किल डेवलप करना है कि हम ऑडियंस को अंडरस्टैंड कर सके, हम किससे बात कर रहे हैं, रादर देन कि हम सिर्फ अपनी बात करने में इंटरेस्टेड हो। हम लोगों की ट्रेनिंग अनफॉर्चुनेटली, अगेन मैं अपने कल्चर साइड पे अगर आपको लेके जाऊं, तो हमें बचपन से कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग्स हमारी नहीं होती। हमारी ट्रेनिंग जो है वो ये होती है कि हम अपनी बारी का इंतजार करते हैं और फिर हम बोलना शुरू कर देते हैं। हमने क्या बोलना है, क्यों बोलना है, ऑडियंस कौन खड़ी है सामने, उसको कैप्टिवेट किस तरह करना है, उसको एंगेज किस तरह करना है, हम इसके मुतालिक एक लम्हे के लिए नहीं सोचते। हम सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करते हैं और हम बात करना शुरू कर देते हैं। आपकी ऑडियंस हो सकता है या टॉपिक जो उस वक्त डिस्कस हो रहा हो वो हो सकता है ऑल टुगेदर फर्क हो जो बात आप करना चाह रहे हैं, लेकिन हम अपनी टेम्पटेशन नहीं कंट्रोल कर पाते और हम अपनी बात उसी तरीके से करना चाहते हैं जिस तरीके से हम करना चाहते हैं। ठीक है, सो बहुत से लोग आपको अपने हल्के में नजर आएंगे जहां पे आप देखेंगे यार इस बंदे का नॉलेज तो मुझसे भी बहुत कम है, मुझसे पूछ के जाता है, और बॉस से जब बात करता है तो बॉस उसके मुतालिक वाह वाह कर रहा होता है। वो ये नहीं है कि उसके पास वो नॉलेज आपसे ज्यादा है, उसके पास वो इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो बॉस को या सुपरवाइजर को वो बात बता रहा है जितना जितना प्रिसाइसली उसके लिए बताना जरूरी है। आप शायद चूंकि बहुत ज्यादा जानते हैं तो आप अपने सुपरवाइजर को फ्रस्ट्रेट कर देते हैं उस लेवल ऑफ डिटेल से जो उसका इंटरेस्ट भी नहीं है। आप लोगों को सवाल करने की ऑप्शन नहीं दे रहे, आप हर सवाल का जवाब खुद देना चाह रहे हैं पहले से, और आप सोच रहे हैं कि शायद आप एक ऐसा इंप्रेशन जनरेट करेंगे कि आप कितने नॉलेजेबल हैं। सो देयर इज अ वेरी फाइन बैलेंस इन टर्म ऑफ कि आपका जो आपका टेक्निकल स्किल सेट और टेक्निकल नॉलेज वर्सेस आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस, क्योंकि इन दोनों का जो एक अल्टीमेट बैलेंस है दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आपकी जो इंफॉर्मेशन की डिटेल है वो कितनी होनी चाहिए, और जो उस एरिया में जिस महफिल में आप बैठे हुए हैं जो गुफ्तगू हो रही है वो किस लेवल की है, और क्या आपके लिए वो बोलना जरूरी भी है। वो बहुत दफा तो हमें अपनी टेम्पटेशन कंट्रोल करनी पड़ती है क्योंकि आपका इनपुट चाहिए नहीं होता, लेकिन हम लोग चूंकि बैठे हुए हैं, टेम्पटेड हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो हम अपनी बारी जैसे ही हमें मिलती है हम टक 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 शुरू हो जाते हैं बात करना। सो अगर मैं वापस लेके जाऊं आपको इस वीडियो में, तो उसने अपनी रेपुटेशन को लेवरेज किया, उसने अपनी बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड को लेवरेज किया, और वो अपनी ऑडियंस को उस तरीके से लेके चला जो कि ऑडियंस के लिए एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन थी, बल्कि उसने एक वाव फैक्टर जनरेट किया विद हिज एटीट्यूड एंड स्टाइल, राइट। सो ये एक पूरी कम्युनिकेशन थी। इसमें गिटार इज नॉट द फोकस एरिया, इट्स हाउ द पर्सन रियली रिफ्लेक्ट दैट। उसने अपना स्किल, ऑडियंस, अपना एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज, उसकी आर्टिकुलेशन जब उसने शुरू की थी तो उसने किस तरह लोगों को एंगेज किया था कि आवर रिलेशनशिप लाइक विल outlast our fame। सो उसने एक जुमला यूज किया था। तो आई विल एनकरेज यू गो बैक एंड रिव्यू दैट वीडियो एटलीस्ट 2-3 दफा, और उस बॉडी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, और अगर आप उसको रेप्लिकेट कर सकें वो आपके लिए एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज होगी। और रेप्लिकेट करने का सबसे आसान तरीका होता है शीशे के सामने। सबसे पहले शीशे के सामने 2-4 दफा रेप्लिकेट करें, फिर अपने ऑफिस में उसको प्रैक्टिस करके देखें और लोगों का रिस्पांस देखें। उसमें आप अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज करेंगे, लोगों का रिस्पांस चेंज होना शुरू हो जाएगा कि वो इंतजार नहीं करते आपका कि आप बोलें, आपकी बॉडी लैंग्वेज उन्हें बता देती है और उसी के लिहाज से आपको रिस्पॉन्सेस मिलना शुरू हो जाते हैं। और वो बॉडी लैंग्वेज आपकी चेंज होती है जब सबसे पहले आप अपना थॉट प्रोसेस चेंज करते हैं, आप अपने सेल्फ डाउट खत्म करते हैं। देखिए, गलत होना इज ओके, सही होना इज ओके, इन डाउट होना जो है ना दैट्स नॉट ओके। जब आप गलत हैं, आप गलत हैं, आपको कोई बता देगा कि आप गलत हैं। अगर आप सही हैं तो आप सही हैं, लेकिन जब आप डाउट में होंगे ना तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप दरमियान में रुके हुए हैं, आपको पता ही नहीं है कि रास्ता लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, आप चौक में खड़े हो गए बस, और अब आप फैसला करने से कतरा रहे हैं या आप अवॉइड कर रहे हैं, और आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो चीज नजर आ जाती है। गलत या सही फैसला, फैसला जरूरी है। डाउट्स जो है वो अपनी लाइफ से हमें निकालने हैं और हमने एक फोकस लेके चलना है, और वो फोकस हमारी बॉडी लैंग्वेज में भी रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। अगर आप कंधे झुका के इस तरह करके और इस तरह करके बैठे होंगे और आपके शक्ल पे हमेशा एक बेचारगी होगी ना, तो आप उस कम्युनिटी का या उस महफिल का पार्ट नहीं बन सकेंगे। लेकिन अगर आप रिलैक्स बैठे हुए हैं और आप एक कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हुए हैं और आप लोगों की बात सुन रहे हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। वी विल कम टू द लिसनिंग साइड। सुनना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी, अगेन मैं बात करूं फंडामेंटली, ज्यादातर, आई एम जनरलाइजिंग इट,
ज्यादातर हमारी ट्रेनिंग जो है वो बात करने की होती है, लिसनिंग की नहीं होती। सो अगर हम एक महफिल में बैठे हुए हैं और कोई बात कर रहा है ना, तो हम अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं, हम उसकी बात सुन नहीं रहे होते। हम मोबाइल पे देख रहे होंगे, हम व्हाट्सएप करेंगे, और जैसे कोई हमसे पूछेगा तो हम अपनी बात शुरू कर देंगे। सो अगर आप खामोशी से बैठे हैं और आप अटेंटिव हैं, सो आप अचानक पूरी महफिल का जो है ना रिदम चेंज कर देते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो अटेंटिवली सुन रहे होते हैं विद द कॉन्फिडेंस एंड दे आर स्टिल साइलेंट। ठीक है, क्योंकि हमारा दूसरा मसला ये होता है कि जैसे ही हम सुनना शुरू करते हैं, हम दूसरे की बात काट के अपनी बात भी करने की कोशिश करते हैं। सो 2-3 चीजें जो हमने यहाँ पे आज अपने लिए प्रैक्टिस करनी है अगले 2-3 दिन में। नंबर 1, हमने अपनी बॉडी लैंग्वेज देखनी है। मेरे शोल्डर स्ट्रेट होने चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, गो बैक टू एक्सरसाइज, मेक श्योर कि आपकी बॉडी उस शेप में हो। अगर आपकी बॉडी की शेप सही नहीं है तो बहुत सी चीजें आप वहां पे ही लूज करना शुरू कर देते हैं। सो डू ट्राई टू गेट इन शेप। आपके लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज आपको मेंटली और फिजिकली एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में ले जाती है। सो ट्राई टू फाइंड सम टाइम और एक नई रूटीन और हैबिट डेवलप करें। चाहे वो 3 किलोमीटर की वॉक ही क्यों ना हो, बट डू बिल्ड दैट हैबिट कि आपकी फिजिक और आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो अलाइनमेंट की साइड पे आना शुरू हो, ताकि आपके पास थोड़ा सा फ्री टाइम आपको मिले और आप सोच सकें, रादर देन कि आप हर वक्त डिजिटली कंज्यूम्ड हो या किसी सोच में कंज्यूम्ड हो। जब आप इसको अपनी रूटीन और हैबिट बनाएंगे, उसमें आपको एक डिफरेंस नजर आना शुरू होगा। तो हमने एक अपनी रूटीन और हैबिट डेवलप करनी शुरू करनी है एक्सरसाइज के हवाले से। दूसरी, हमने रूटीन और हैबिट डेवलप करनी है कि जब हम कमरे में एंटर हों तो हमने इस तरह एंटर होना है कि हमने ये पूरा कमरा कंकर कर लिया है, हम जीत गए हुए हैं, हम एंटर ही जीते हुए हो रहे हैं। ठीक है, आपने डाउट्स नहीं जनरेट करने, आप एक जीते हुए मोड में एंटर होते हैं कि ये अब आपका प्लेग्राउंड है जिसमें आप जीत गए हैं। आपने सिर्फ ये डिसीजन लेना है कि आपने गोल कितने करने हैं जीतने के लिए। दूसरा, आपके पास जो एक एलिमेंट आएगा, अपना जो सेल्फ असेसमेंट आपने किया, हम इस पे भी बात करेंगे, लेकिन आप जब एंगेज कर रहे हैं लोगों को तो पहले आपने सुनना है। लोगों को बात काटनी नहीं है, बात काटनी नहीं है। ये बहुत मुश्किल है। हम लोग इतने यूज्ड टू हैं कि हम अगले बंदे की बात नहीं सुनते और हम दरमियान में काट देते हैं। और दूसरा, हमने अपनी टेम्पटेशन कंट्रोल करनी है इनिशियली बात करने की, अनलेस अंटिल इट्स रियली रियली रिक्वायर्ड। और अगर बहुत जरूरी हो तो मेरा बात करने के लिए आपको रिकमेंडेशन इस ड्यूरिंग द सेशन ये होगी कि आपने जवाब नहीं देना, आपने सवाल करना है। ठीक है, आपने एक सवाल करना है और वो सवाल व्हाट और व्हाई के जुमरे में होना चाहिए, हाउ के जुमरे में नहीं होना चाहिए। आपने ये नहीं पूछना आप ये कैसे करेंगे, आप ये पूछेंगे कि आप क्या करेंगे और क्यों करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे वाला सवाल नहीं पूछना। सो आपने 2-3 चीजें, बॉडी लैंग्वेज आपकी विनर की है। आपने कमरे में एंटर होना है तो ऐसे एंटर होना है कि आप जीत चुके हुए हैं और आपने ये आपका डिसीजन है कि आपने 4 गोलों से जीतना है या 6 गोलों से, जो भी आप डिसाइड करेंगे यू विल गेट इट। शीशे के सामने प्रैक्टिस करें इस चीज को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को खुद इवैल्यूएट करें। 1-2 वीडियोस और देखें, आपको यूट्यूब पे भी बहुत वीडियोस मिलेंगे। एक्सरसाइज, दैट्स अ इंपॉर्टेंट एलिमेंट। अपने आप को किसी रूटीन और हैबिट में डेवलप करें जहां पे आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कर सकें, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी। वो 2-3 किलोमीटर की वॉक है, वो क्या है, जो भी, दैट्स योर डिसीजन, बट ब्रिंग इट एज अ रूटीन। शुरू में सांस भी फूलेगा, आपके पास एक्सक्यूजेस भी होंगे कि आज आप क्यों नहीं कर सकते, बारिश हो गई, हबस था, मौसम खराब था, या अम्मी ने कुछ कह दिया, या कोई और काम आ गया। बट फाइंड एटलीस्ट 40 मिनट्स जहां पे आप एक एक्सरसाइज कर सकें। सारे दिन में वो 40 मिनट्स आपने ढूंढने हैं जहां पे आप कंसिस्टेंटली एक रूटीन से कर रहे हो और आपने अल्टीमेटली एक रूटीन डेवलप करनी है। और आखिरी चीज दोबारा मैं आपसे कहूंगा, लिसनिंग। आपने बात सुननी है, अपनी किसी की बात काटनी नहीं है, और आपने अपनी टेम्पटेशन कंट्रोल करनी है गुफ्तगू करने की, कि आपसे अगर आपने कोई दरमियान में कंट्रीब्यूट करना भी है तो वो सवाल होना चाहिए, और वो सवाल व्हाट और व्हाई का होना चाहिए, हाउ का नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम अपनी बारी का इंतजार नहीं कर रहे कि कब हमें बारी मिले और हम अपनी ट्रेन चला दें गुफ्तगू की। हमने वेट करना है, और जहां पे कंट्रीब्यूट करना है वहां पे हमने व्हाट और व्हाई का सवाल लेके आना है, हाउ का सवाल नहीं लेके आना। ठीक है, वो गुफ्तगू को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। कैन वी डू दैट? कैन यू जस्ट पुट yes, no there? Does it make sense for you? Do you understand what I am asking for, or do I need to like explain again? Harun, I hope you can hear me. Loud and clear. Okay. Sajid, I think the next session on Wednesday for this group is a group activity.
और उसके लिए हम इनको टीम मीटिंग के लिंक्स फॉरवर्ड करेंगे जो कि ये खुद ज्वाइन करेंगे और खुद एज अ ग्रुप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होंगे. सो ऑल्दो ये जो कॉम्पिटेंसी हमने क्वेश्चनर दिया है इनको, दैट्स एन इंडिविजुअल एक्सरसाइज, but can we give them an activity or an assignment to perform for Wednesday to discuss this among themselves or to share their competencies with others and see where the major differences lie? मेरा ख्याल है what I would suggest कि एक तो जो अभी हमने प्रैक्टिस की बात की, people should come back and share their experience कि इन्होंने अगले 2 दिन में like कल का दिन है, आज की रात है, how they are trying to practice it, कितने लोगों ने एक्सरसाइज की, कितने लोगों ने एक्सरसाइज नहीं की, कितने लोगों ने ये विनर एटीट्यूड दरवाजा खोल के अपने एम्प्लॉयर की साइट पे घर पे उसको रिफ्लेक्ट किया, उनकी चाल धाड़ किस हद तक चेंज हो रही है. यूट्यूब पे आप वीडियोस भी देख सकते हैं इसके लिए. इसके अलावा आपने किस हद तक आपने अपनी टेम्पटेशन कंट्रोल की गुफ्तगू करने की. सो पीपल कैन कम बैक एंड शेयर देयर एक्सपीरियंस ऑन दैट. सो ये बात हो गई इस वीडियो से रिलेटेड जो हमने देखी थी, और उसमें हमने एक एटीट्यूड देखा था और उस एटीट्यूड के कुछ सब कंपोनेंट्स थे जो अभी हम बात कर रहे हैं. दूसरा, आई वुड सजेस्ट वेडनेसडे के लिए जो कॉम्पिटेंसीज हैं, पिक, आपके पास एक पूरी लिस्ट अवेलेबल है. आई विल जस्ट गो विद द फर्स्ट 4 जो हमारे पास शुरू में है. जो पहली 4 है, सिर्फ उसकी एग्जांपल्स शेयर कर लें कि हाउ दे हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इन देयर रियल लाइफ. ठीक है, सिर्फ पहली 4 की. applies appropriate leadership strategies to effectively deliver business objective, lead, motivate and manage people to optimize performance and effectiveness, collaborate, support and work to achieve objective of the organization applying appropriate digital technologies, and act proactively and think strategically in anticipating organizational need, recognizing the wider business environment and dynamics. ये top 4 हैं जो Excel में आपको नजर आ रही हैं. Just stick to those 4 and share that how you can reflect. Number 1, आपने अपने आप को कहाँ रेट किया है इसमें, और फिर उसकी एग्जांपल शेयर कर रहे हैं. सो ये दो आइटम्स आई वुड से कि आपने एक एक्सपीरियंस शेयर करना है कि between right now and till Wednesday you meet among as a team, उसमें आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि विनर एटीट्यूड कैन यू रियली मैनेज टू रिफ्लेक्ट दैट. और मैं आपको अभी बता दूं, सांस फूलेगी और बहुत मसाइल होंगे क्योंकि वी आर समटाइम वी आर नॉट यूज्ड टू ऑफ दैट. सो वो चेंज जो है ना, दैट किल्स अस कि हम इतने शर्मिंदा हो रहे होते हैं, एम्बैरेस हो रहे होते हैं कि मैं वाकई ये करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे. सो इस वक्त हमें लोगों को नहीं सोचने की बात करनी, वो हम तकरीबन 2-3 महीने बाद देखेंगे कि वो आपके मुतालिक क्या सोचते हैं. right now we have to put you on a different path, और उस पाथ पे चलने के लिए आपको कुछ हैबिट्स और रूटीन्स और कुछ एटीट्यूड्स चेंज करने पड़ेंगे. और दूसरी एक्सरसाइज जो आपने सेल्फ असेसमेंट की है, उसके जो पहले 4 कंपोनेंट्स हैं उस पे अपनी रेटिंग शेयर करें और शेयर करें कि आपके पास क्या एग्जांपल है, हाउ यू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दैट पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसी ड्यूरिंग योर रियल लाइफ. वो आपके स्कूल से एग्जांपल हो सकती है, पर्सनल लाइफ से एग्जांपल हो सकती है, और आइडियली आपके, अगर इफ यू आर वर्किंग, आपके एम्प्लॉयर साइट पे आपके प्रोफेशनल लाइफ से एग्जांपल हो सकती है. Over to you, Harun. Thank you very much. And now let me tell you exactly how you're going to run this next session. First of all, Nizam is going to be with you people at that session. आप लोगों को between today and tomorrow आप लोगों को Microsoft Team मीटिंग का एक लिंक मिल जाएगा जिसको क्लिक करके आपने अपना Wednesday वाला सेशन 4 to 6 आपने ऑन करना है, and then it will only be you people there. अभी हमने आप में से कोई ग्रुप लीड अपॉइंट नहीं किया. जो सजीद ने आज आपको डिसिप्लिन, लिसनिंग स्किल्स ये बारे में बताया, इस बारे में आप लोगों ने वो खुद प्रैक्टिस करनी होगी. Of course, multiple people cannot talk at the same time in a digital environment. So wait for your turn to talk and then, mostly listen. इन एक्टिविटीज को आपने इन अ ग्रुप फैशन परफॉर्म करना होगा. फिर जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम एक ग्रुप का रिव्यू भी लेंगे. Sajid, I would suggest that I think after a couple of sessions we will appoint a team of leaders from this group जो के feedback share कर सकें और जो के जो एक्टिविटीज रन होंगी उनको कैरी आउट भी कर सकें फ्रॉम दिस सेशन. एंड दैट विल उसका क्राइटेरिया हम सेट कर सकते हैं कि हम किस तरह एक लीड फ्रॉम द ग्रुप सेलेक्ट करेंगे. अभी हम लोग नहीं कर रहे होंगे. We will not be the one selecting the leader. The group will themselves. Yeah. Sure. Okay. And
Yeah, and I think going forward हम कुछ assignments ऐसी भी आएंगी जिसमें in groups को teams में divide कर रहे होंगे. So like I said in the orientation session, teams of 10 people each. Right? So आज हमारे पास अगर let's suppose 40 का number touch किया था हमने, so about 4 teams will be available. जो इसके बाद वाला हमारा session है उसमें 150 people have registered and I'm expecting that all of them will be there. Okay, now if there is any further question, I know some of you have sent us requests to change sessions, कुछ nominations आई हुई हैं. इन nominations पे इस week में काम हो रहा है. Okay, all these have been forwarded to Nizam, my colleague, and he will be able to keep in touch with all of you and switch you between groups in order to adjust your time slot. And number two, any nominations that you've made, वो उनको भी consider कर रहे हैं इस वक्त. Okay, so I think with that, we call it off for today's session. I hope you enjoyed the first session. Do reflect on the learnings from this session as well. And if there's anything that you want to share with your team or with us next time, please do bring that with you in the next session. Our next moderated session is going to be 4 o'clock on Friday. Okay, I hope all of you have seen your schedules. You've received the invites. ठीक है, इनके ऊपर अभी भी मैं और निज़ाम कुछ थोड़ा सा इस पे वर्क कर रहे हैं, तो आपको कुछ थोड़ी सी इसके अंदर चेंजेस नजर आती जाएंगी. जैसे मैंने आज आपको Microsoft Teams वाला सेशन इंट्रोड्यूस कर दिया है. So like I said to you, the next moderated session will be run through GoToWebinar, which is the same platform, on Friday at 4 p.m. Okay, till then, thank you very much and good luck and enjoy your activities that you just. Thank you very much and Allah Hafiz. And Harun, can we get feedbacks as well? Okay, sure. You want to get audio feedbacks? No, yes, no, or we can run some polls next time, and then we can keep having, because physical में you can see the body language and you can see how things are going. But इसमें feedback जो है वो एक important element होगा हमारे लिए, क्योंकि we will be guided by the participants rather than we create a monologue type stuff. So वो guidance उसी वक्त आ सकती है जब एक instant feedback आ रहा हो या at least post session feedback आ रहा हो. Okay, so let me say in about 2 to 3 words only. If you want to give feedback about today's session, what are your key takeaways? So अगर आप questions box में अपना feedback type in कर दें. By the way, जो question box में आप जो कुछ type कर रहे हैं, all this is being recorded और इसका एक पूरा log हमारे पास पड़ा होगा. So this will be available to us and to you afterwards also. So in the questions dialog box, please type in your feedback about today's session. Particularly indicating what are your key takeaways from today. Motivation, yes. Informative. Noman and Arshia have given us the feedback so far. Expecting more to come. Confusing. Okay, all right. Confusion Direction. is the first stage of learning. Confusion, if you are confused, that means you have started thinking, and I think we have achieved our objective if that confusion exists right now. Okay, Mohsen Siddiqui is saying about the winning attitude. That's the most useful advice. Interesting. Learning key points regarding effective communication and delivering your message. Informative. Amazing session. He'll try his best to Sabah Rahmat. Try my best to work on the body language. Informative, motivational, motivating, encouraging to change. Participative, out of box. Mind digging, Umair Afzal. Okay. So that's again mean that we managed to hit the spot.
Yeah. Good one. I think the more discomfort we manage to generate, that's mean you are trying to change your path. Yeah. And I think it's slowly beginning to set in, but of course there'll be much more opportunities. अभी आज हमने notice किया कि people were trying to speak up, people trying to to share their profiles openly. इसमें हमारा एक session होता है elevator pitch का. So Sajid, I'm sure हम वो भी run कर रहे होंगे elevator pitch भी. So from the introduction you heard today to the introduction that you will be making to each other after listening to the elevator pitch, I think it's going to be interesting. It's going to be interesting. So आज मैंने आपको 30 seconds दिए थे per introduction. In an elevator pitch, you may not even get 30 seconds. इससे पहले floor आ जाता है. So 30 seconds, maybe 10 seconds introduction. So, Sajid, I think good feedback. There were individuals, yes, Hafsa is saying it's a bit confusing again. So I think second feedback saying that it was confusing, but as long as it sets you to start thinking, I think as Sajid mentioned, the purpose is being served, right? So whether it's confusion or it's something being plowed in your brain, right? जिसके बाद आप you start thinking afresh. That could be that could be the onset of this. And most of the time, confusion is a state when the expectation and the reality does not match. So अगर आपकी expectation एक skill set learning या tool set learning की थी और आज जो गुफ्तगू हुई उसमें वो सारी चीजें नहीं थी, तो that's a confusion for you कि whether you are on a right session or not. Second part जो confusion generate होती है कि हम over the period हम अपने कुछ एक mindset develop करते हैं, कुछ concept develop करते हैं, और somebody comes and start challenging those concepts, so बंदा confused हो जाता है कि whether I was doing right thing or whether I really need to challenge and change something. So that's another state of confusion where your concept are challenged. So it's not the gap of expectation and what's happening on ground. It's basically challenging your concepts, how you were thinking about the life, and somebody comes and say there could be another way to look at that. And that's created confusion. But confusion either way is a first step when you start learning. So over to you, Harun. That's all from my side. All from my side as well. I think we've given them sufficient work for the next session. Nizam, you and I will have to work late tonight as well and send them all the Microsoft Teams link for the next session on Wednesday, 4 o'clock. Okay, thank you very much. If there's any confusion, any further thoughts, confusion about how we are operating, do keep in touch with us. Okay, and you know how to get in touch with me. I think there are about 99 emails that have been sent to Nizam, poor chap, and he'll be working on those today. Okay, thank you very much and take care. Thank you. Allah Hafiz.